Hello, good morning class. This is your EVS class, and in EVS we are on chapter 2, and in chapter 2 we are recapitulating our topic transport. Okay, so we have already done our two transport. Which one? First is land transport and second one is water transport. And today we are going to discuss our third transport, that is air transport. So just have a look with me on the board. We are going to draw an air transport. What is air transport? So we are going to learn and we will do question answer of land air transport. So this is air transport. Just कौन-कौन से होते हैं हमारे air transport? First I am going to write here. First, as we know, aeroplane is a air transport, जिसको सभी जानते हैं. Aeroplane, and next one is helicopter, and one more is rocket. Rocket is also an air transport. And one more I have, and that is space shuttle. So I'm writing here space shuttle. So these are the main four air transport, that is aeroplane, helicopter, rocket and space shuttle. So what is air transport? होता क्या air transport? A vehicle that flies in the air are called air transport. Means जो भी vehicles हवा में उड़ते हैं, these are called air transport. और उनके नेम मैंने आपको बताई दिए हैं. These are the some name of air transport. Now we are going to do question answer related to our air transport. So just okay students, now we will do our question answer related to our topic, and the topic was air transport. So just we are going to start our question answer. Just read with me questions and answer. So our first question is, what is air transport? Means air transport क्या होता है? So the answer is a vehicle that flies in the air is called air transport. So I am repeating again. A vehicle that flies in the air is called air transport. Means वो vehicle जो हवा में उड़ता है, that is called air transport. Now our next question is, which is the fastest means of transport? So we have done different types of transport. That one is land transport, water transport and air transport. So now we have to tell which is the fastest means of transport. में जो हमारे 3 ट्रांसपोर्ट हैं, उनमें से सबसे fastest means of transport कौन सा है? तो that is air transport. As we have discussed कि air transport सबसे fastest transport है, क्योंकि वो कम समय में हमें बहुत अधिक दूरी तय करवाता है. So that is air transport. So we will write here. We are going to write only name air transport. Air transport is the fastest
means of transport. मीन्स अगर आपको सारे ट्रांसपोर्ट्स में से पूछा जाता है कि सिर्फ आपको पूछा जा रहा है कि फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, सबसे फास्टेस्ट ट्रांसपोर्ट कौन सा है, तो दैट इज एयर ट्रांसपोर्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट. So here we have to write down the name of some air transport. So first is aeroplane, helicopter, and rocket. रॉकेट भी क्या है हमारा, एयर ट्रांसपोर्ट. एंड स्पेस शटल, these are the some air transport, that is aeroplane, helicopter. Okay बेटा, next question है, from where aeroplanes take off and land. मीन्स जो एरोप्लेन्स हैं वो कहाँ पर टेक ऑफ करते हैं और कहाँ पर वो लैंड करते हैं, तो दैट इज एयरपोर्ट. सो वी कैन राइट हियर एरोप्लेन्स टेक ऑफ and land from airport. That place is called airport. जहां से एयरप्लेन्स टेक ऑफ करते हैं और लैंड करते हैं, that is called airport. Next question is, which air transport used by astronauts. जो हमारे एस्ट्रोनट्स हैं जो स्पेस में जाते हैं, तो which transport they use air transport. And which transport they use space shuttle. So I'll write here space shuttle is used by astronauts. Space shuttle is used by astronauts. Astronauts जो होते हैं हमारे, वो स्पेस शटल यूज करते हैं. एंड डू यू नो कि जो हमारा फर्स्ट स्पेस शटल था वो हमारा कब गया था, 1969 में. और सबसे पहले हम कहाँ गए थे, मून पर. स्पेस शटल लेकर अपना कहाँ गए थे सबसे पहले, we traveled on moon in 1969. So our next question is, which transport you will use to go one country to another. मीन्स आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाने के लिए कौन सा ट्रांसपोर्ट आप यूज करेंगे, सो दैट इज एयर ट्रांसपोर्ट, क्योंकि बहुत जल्दी पहुंचा देता है. और आप कंट्री तो आप ना तो बस से जा सकते हो ना ट्रेन से जा सकते हो, सो यू हैव टू यूज air transport. So our answer is air transport. So we are going to write only name here. So we will use air transport to go one country to another. Okay students, now we will do a question answer related to a topic, and the topic was air transport. So just we are going to start our question answer. Just read with me questions and answer. So our first question is, what is air transport? Means air transport क्या होता है? So the answer is a vehicle that flies in the air
called air transport. So I'm repeating again. A vehicle that flies in the air is called air transport. Means वो vehicle जो हवा में उड़ता है that is called air transport. Now our next question is, which is the fastest means of transport? So we have done different types of transport. That one is land transport, water transport and air transport. So now we have to tell which is the fastest means of transport. में जो हमारे 3 ट्रांसपोर्ट हैं उनमें से सबसे फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन सा है? तो दैट इज एयर ट्रांसपोर्ट. एज वी हैव डिस्कस कि एयर ट्रांसपोर्ट सबसे फास्टेस्ट ट्रांसपोर्ट है क्योंकि वो कम समय में हमें बहुत अधिक दूरी तय करवाता है. So that is air transport. So we will write here. We are going to write only name air transport. Air transport is the fastest means of transport. मीन्स अगर आपको सारे ट्रांसपोर्ट्स में से पूछा जाता है कि सिर्फ आपको पूछा जा रहा है कि फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सबसे फास्टेस्ट ट्रांसपोर्ट कौन सा है, तो दैट इज एयर ट्रांसपोर्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट. So here we have to write down the name of some air transport. So first is aeroplane, helicopter, and rocket. Rocket भी क्या है हमारा एयर ट्रांसपोर्ट. And space shuttle. Space shuttle. These are the some air transport, that is aeroplane, helicopter, rocket and space shuttle.